I think that is one of the most intense training modules for IELTS. There is a reason behind it. इसके पीछे का the reason is because you have to read three passages in the course of 1 hour, basically. Three sections, you get three passages which are technical, academic in nature. It's not just general. In general training, in general training of our reading, you get basically, अखबार के अंदर advertisements जैसे रहते हैं, newspapers you get advertisements or general topic के बारे में discussion. So that's what you get, but not in the academic reading. In academic reading, you get scientific based essays, right? If I can give you an example, uh, this is something which you can expect. William Henry Perkins. No one knows about William Henry Perkins, right? But as soon as you go, you'll know his journey, what his story is, what it's gonna be. So technical, in search of extraterrestrial intelligence. This is something we don't know about, aliens and something. But when you go through that, so it's more technical. You have to read everything, and you'll get not one, not two, but three passages. The history of tortoise, something like that, right? So these are some of the examples of the passages you can expect that you will get. Total time provided 60 minutes, three sections, and total number of questions 40 basically, right? Just like listening. Though you can mark and write on the question paper, you must enter your answers on the reading answer sheet. Okay. So that's how I approach when I was giving my IELTS examination. How I got 7.5 bands in reading is I was marking all my answers on the question paper, and then once I'm done with that, I just make it fair on the answer sheet. So that saves a lot of time. All make sure all the answer sheet, all the answers we mark are in capital letters, all caps. Right. So that's important. No extra time is given for transferring your answers from test booklet to reading answers, just like listening, right? Listening, where you get extra 2 minutes, 10 minutes, but in this you don't get any extra time. So just so you know, that saved that so that's important. जैसे आपका एक section हो जाता है, fair कर लो. Section 2 fair कर लो, right? So keep on doing it because there is no extra time given. The academic and general reading tests are graded on the same level. However, because of the text in the reading test are more challenging, right? Testing system same रहता है, as you can see. What is this? This is the academic module and general training module के band scores. इन जनरल ट्रेनिंग यू कैन सी अगर आप 40 स्कोर करोगे तभी आपको 9 बैंड्स मिलेंगे बट इन एकेडमिक इवन इफ यू स्कोर 39 मार्क्स यू विल गेट 9 बैंड सो बट इजियर हाउएवर एकेडमिक मॉड्यूल डिफिकल्ट होती है इन जनरल इट्स डिफिकल्ट राइट इन कंपैरिजन विद जनरल दैट्स व्हाई उनका थोड़ा सा लीनियंट रहता है व्हेन इट कम्स टू मार्किंग. So in reading, skimming and scanning is very important. We'll have a discussion on how we are helping in getting skimming and scanning. But I just want you to have a look here. पहले तो मैं scoring बता देता हूँ. Every answering every single correct answer gets you 1 mark, right? 40 questions, no negative marking, right? No negative marking. So attempt everything, just like listening, guys. Attempt everything. It's very important. And scores are reported in whole and half band. So right, जैसा कि आप देख सकते 7.5 7.9 जैसा कुछ नहीं होता, right? So that's pretty much it. Question इतना समझ में आ गया? Do you have any questions? Okay. So now moving ahead to question types. Question types is basically what are the questions you can expect from the examination. So examination board of IELTS has these types of questions like MCQ आ सकता है, list selection आ सकता है, and other questions. And you can expect यही questions. इसके अलावा कोई extra questions नहीं आते. So some questions are easier and some questions are more challenging than the others. There is a simple reason behind that some questions just like true false not given or heading matching, feature matching, right? These are considered easier. ये थोड़े आसान होते हैं.
in comparison with something like sentence completion, list selection. The reason is order. Order में जैसे कि if you get true false not given for example, right? If we let's find any fill in the blanks, true false not given, they both are easier. They are in the same chronology. Yeah, they are always in the correct. They are always in the same chronology. Um, Basically, what it means is, let me just give you an example. There are some question types, but usually इसके अंदर सारे difficulty हैं. Sentence completion in class definition, as the name suggests, read the instructions, how you do it. No, it's a particular question type के हिसाब से भी we have, but ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बेसिकली इज लाइक अगर आपको क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मिल गया ना, फिर टू सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब उसके बाद धीरे धीरे जैसे एज सून एज यू रीड द पैसेज यू विल गेट द आंसर्स, राइट? जैसे कि इफ यू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, आंसर इज लाइन समवेयर हियर, राइट? है ना? तो यू विल गेट ऑल द आंसर्स, उसके नीचे नीचे आप पढ़ते जाओगे ना, एज सुन एज यू स्टार्ट रीडिंग सेकंड का आंसर आपको यही इसके नीचे ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा. बट द क्वेश्चन आंसर जस्ट लाइक लिस्ट एंड सिलेक्शन, ये सब जिनके डिफिकल्ट रहते हैं, जिनके ऑर्डर में नहीं रहते, विच मीन्स अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड का आंसर यहाँ पे मिल गया, थर्ड का आंसर यहाँ पे भी मिल सकता है आपको. Doesn't mean that वो progression में रहेगा. Like you might have to read that question like passage again and again to get the answers, right? In which type of questions? List selection is there, MCQ is there. बता रहा हूँ एक second. You can expect that MCQ से they are challenging, right? लिख लेना जो मुश्किल कौन से होते हैं, आसान कौन से होते हैं. There is a reason why I'm telling you कि which ones are the easier ones and which one are the harder ones, right? So that you can decide which one आप कौन से पैसेज को पहले करोगे, कौन से को बाद में करोगे. तो MCQs basically are difficult. This selection is challenging. Information matching is easy, so don't mark that. Teacher matching is also easy. This is also easy. Sentence completion sometimes get tricky. Short answer question is tricky. Choose a title is tricky. Right? These things are tricky ones, right? Don't worry about flowchart diagram. ये आता ही नहीं है. So always make sure कि you look at that right before checking or anything. Like I will mark them. This is hard, right? Pacing. Oh, perfect. Pacing. How do you do that? You get IDP says 20 minutes on each task, right? 20 minutes on each task, IDP says. But that is a wrong philosophy, right? That's a wrong philosophy. Should not spend 20 minutes. That's death. So how do you approach it? Very simple, guys. Consider task one as the easiest, task two as medium difficult, and task three as the most difficult, है ना? So you should spend 45 minutes, 45 minutes on your task one. 45 basically, wait a second, I'm not saying 45 minutes, 30 and 13, 15, 20, 25. Yep, 15, 20, 25. Once again,
You should spend 45 years, 20 years, and 5, 25. Let me spend. मेरा एक मिनट यार. How it works is spend 15 minutes on your task one, considering the fact that that's the easiest. 20, 15 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, right? So timer goes opposite में. You know, in examination, you have seen in listening, reading में भी, there is a timer basically. So once the timer comes at 45, that means your first task should be over. Once the task comes at 45 के बाद 20 minutes, that's 20 minutes. Task 2 में आपको 20 minutes लगने चाहिए, right? So when that comes on to 25, that means आपका task 2 complete हो जाना चाहिए, right? And 25 to 0 मतलब 25 minutes है आपके पास, तो task 3 हो जाना चाहिए. ये इसको समझ में आया सब? 45, 25, 0. So that's how timer ऐसे चलता है, right? So as 45, 25, 0. Right? So that's how much you should be taking and हमेशा timer on करके ही करना एग्जाम को, so that you will have the correct pacing. What I'm helping you is understanding pacing. So task one, task two, and task three. That's how you navigate yourself. Right? ये structure करोगे तो you can expect 7 bands. Right? But इस structure में भी एक problem है. There is no time for proofreading. Proofreading. राइट. सारा टाइम चला गया, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो चेक कब करोगे, राइट? तो हाउ डज दैट वर्क इज लाइक स्टार्टिंग में ऐसे ही पेसिंग रखना 15, 20, 25 मिनट्स, राइट? बट एज सुन एज यू guys get better, start getting better, right, and you want to score more than 7, so how you should approach is considering task 1 is the easiest, task 2 is the second most difficult, and third highest is task 3. How you should be approaching the paper is 12 minutes में ये complete हो जाना चाहिए, 18 में ये हो जाना चाहिए, 22 में ये हो जाना चाहिए. So basically here you save 3, here you save 2, here you save 3, 3, 6, 7, 8. You saved 8 minutes, which is practical, right? This is how your pacing should be there to get 7 plus bands, right? Uh, right. So as soon as you start getting better, make it faster, make it faster. 8 minutes is good enough. 8 minutes आपके पास अगर मिल गए, so you can check कोई question का आंसर आपको नहीं मिला, you can just give good read, just check, right? And that helps you to have a much better score. वो गिलास था, एक मिनट यार. Thank you. So that's how you pace. But the question which I asked now, how would you determine कि कौन सा कोई पैसेज आसान है, कौन सा डिफिकल्ट है? रीडिंग मेरे व्हाट? साथ ये प्रॉब्लम हुआ था मुझे लगा था फर्स्ट इजी होगा लेकिन फर्स्ट How do you determine that? So basically, how you determine that is you check the questions. पैसेज तो तीनों डिफिकल्ट है, एंड ट्रस्ट मी, पैसेज इतना बड़ा है. इफ आई आस्क यू कि एक पैसेज है, जस्ट लर्न इट एंड यू हैव एन आवर, आप फिर भी नहीं कर पाओगे. So you know the fact that you can't learn a passage, 3,000 word, 4,000 word passage, technical passage in 1 hour, right? So why bother, right? You don't have to. It's an English test. It's not learning test. It's not GMAT, GRE, right? Where you are learning,
right? रटना है. So you don't have to do that. You just have to identify which questions are harder, which questions are easier. तो जिस क्वेश्चन में पहले ही ओपन द क्वेश्चन ईयर, पैसेज तो पढ़ना भी मत, क्वेश्चन देखो जिसमें लिस्ट सिलेक्शन नहीं है, जिसमें मतलब इंफॉर्मेशन मैचिंग है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आसान है. जिसमें लिस्ट सिलेक्शन आ गया वो मुश्किल है, पर सो दैट कम्स विद प्रैक्टिस, राइट? Yes, no, not given is difficult. True, false, not given is easier, right? We'll have a conversation about that. But that's why I've given you the list of question types already. So we'll just segregate it very quickly. कौन सा आसान होता है? MCQ is harder. Okay? तो just mark hard and इसका एक वो बना लो आप, कॉलम बना लो. Just make a column like this, ऐसे करके, hard and easy. Right? It's generally hard doesn't mean hard. It's gonna be more time taking. उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. तो जिस चीज में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, spend it, हाँ, like, और उसको लास्ट में करो आप. Right? This is something you're not gonna find on YouTube or something कि कौन सा hard है कौन सा easy है. It's just, and how I determine which is hard, which is easier, by order, right? कौन से क्वेश्चन के आंसर्स हमें ऑर्डर में मिल जाएंगे, प्रोग्रेशन में मिल जाएंगे, किसके ऑर्डर में नहीं रहेंगे, इधर उधर पूरे स्कैटर्ड रहेंगे 3,000 पेजेस में, right? So that's just more time taking, doesn't mean that they are hard, right? And CBT में एक और benefit है guys, that if you find the answer, all you have to do is control C and control V. तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस है ही नहीं. इन PBT there are much chances कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ही कर दो. Is it like at least so will be there? Well, it has to be there. Not the synonym one. Yes, please, Prisha, please have a seat. Not the synonym or something. No, no, no. You will find all the answers. You will find all the answers. आप नोटबुक निकाल लो. अच्छा कोई बात नहीं. तो आप राजू भैया से नोटबुक. राजू भैया will give you notebook. You have a pen? नहीं 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 नहीं. अरे आप राजू भैया से नोटबुक ले लो. अच्छा. है ना? और पेन तो दे देंगे. हाँ तो वो होगी ना उसके अंदर वो वाले, लेकर आ जाओ. ओके, वी आर डिस्कसिंग रीडिंग हाउ वी डू इट, एवरीवन इज फॉर आइट्स तो आ जाओ. ठीक है. राइट. सो बेसिकली या व्हाट वर यू सेइंग? आसान कौन सा होता है, डिफिकल्ट कौन सा होता है? सो यस, यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप्स, क्योंकि सी जितने मैंने क्वेश्चन टाइप्स आपको दिए ना यहाँ पे, वॉट एवर मेंशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन हियर, इससे कोई थर्ड तरीका कोई और कोई है होता ही नहीं क्वेश्चन टाइप. बस इतना ही है, राइट? वी जस्ट हैव टू डिटरमाइन कौन सा आसान है इसमें से, कौन सा मुश्किल है इसमें से, बाय द ऑर्डर वैल्यू. एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप. जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है दिशा, जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है फॉर रीडिंग, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डिटरमाइन इज, थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाओ, right? The first thing which you have to determine is which are the easier question types and which are the harder question types. Okay, basically. So that helps a lot. Abhi, we are just. Do you have the photo book? I guess. So just make a column like this. Okay. Easy. Hard. I don't know. You are doing. अभी तो आप वो कर रहे हो ना? Mock test, but you are not planning to do it today. कल हम. ठीक है, we'll just get a chair. Give me 1 second. बैठ जाओ. You just have a seat. मुझे remote pass करना. No, not this one. थोड़ा सा क्लास को वेट करना पड़ेगा. मैंने आपको एकदम सर पे कर दिया इसे. आ गया हो? Okay. So just make a column like this, है ना guys? Easy and hard. So we can just differentiate or which are the difficult modules and which ones are the easier modules. Okay? ठीक है? Clear है? कॉलम बनाए. बनाओ. MCQ I'm already telling you hard. H. I'm gonna mark thing, right? Just mark H on there. मैंने annotate करने लगे तो screen stop हो जाती है इसलिए. List से I'll start. Okay.
ये वाला is hard. List selection is hard. List selection basically is I'm gonna talk about that format as well. List selection basically is they'll give you a passage. उसके छोटे छोटे passages रहेंगे. They'll give you a format जिसके अंदर सारी चीजें रहेंगी. I will show you as well. It खत्म हो गया. So I can show you. This is an example of list selection, right? जिसमें कि the text of artwork in different lives on that, which for studying underlines the reasons of artwork. So passage रहेगा इसमें they will talk about all these key pointers, okay? All the keywords will be talked about, but you have to identify in the passage कि कौन से हैं कौन से नहीं है, right? Which statements are true, which statements are not true. So for that you have to read all the whole passage and determine कौन सा है. That's why it's hard, right? You never know government and martial power कहाँ लिखा हो, right? So that's how it is. Moving ahead, moving ahead with information identification, true, false, not given. That's easy. That's pretty easy, right? That's gonna be one of the easiest questions you can find there, right? Why is because first कंसर आपको मिल गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ राइट अंश आपने तो करा ही है तो यू नो फर्स्ट कंसर हो गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ वहीं पे आपको यू विल स्टार्ट फाइंडिंग तो इट्स नॉट गोना बी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ उसका सो हाउ दैट वर्क्स इज नॉट गिवन का क्या मतलब होता है व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय नॉट गिवन आई वांट टू नो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्या मतलब होता है या जिसकी बारे में बात ही नहीं हुई दिस स्टेटमेंट इज नॉट लाइक नॉट इवन ट्रू नॉट इवन फॉल्स जिसके बारे में बात ही नहीं हुई है बात ही नहीं हुई है सो किसी चीज की बात नहीं हुई तो हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दैट राइट सो इट्स वेरी सिंपल once I have told everyone knows about my formula, my systems to how to approach listening and reading. First is you know the first thing, right? What's the first thing? Instructions. Read the instructions. Second, Read the questions. ठीक है, like reading the questions. 1 to 6. बिल्कुल अच्छा आ गया I'll ask him, चलो कोई नहीं. Read the questions. Third, mark the. On the keywords. Fourth, assume the answer. And fifth, Right. as listening the audio or writing, reading, whatever, reading. So अगर आप keywords mark कर रहे हो right in the third stage if you mark the keywords and उस keyword के अंदर the keyword which you marked in the passage it's not even mentioned like दो बार साथ अगर वो keyword mention नहीं है that means that it's not gonna be there, it's not given. If you have marked a keyword after you've read the question if you have marked the keyword and that keyword is not even there like दो बार या दो बार से कम है the answer is going to be not given. सर जैसे उन्होंने क्वेश्चन में ये दो पूछा बार है से कि कम बुर्ज खलीफा नॉट द टॉलेस्ट बिल्डिंग ठीक है और पैसेज के अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि नहीं बुर्ज खलीफा की बात नहीं करी उन्होंने लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग पे बात करी है बट बुर्ज खलीफा इज नॉट देयर जनरली वी नो बुर्ज खलीफा इज अ टॉलेस्ट बिल्डिंग बट जो राइटर है जिसने पैसेज लिखा है उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसे बुर्ज खलीफा को कंसीडर नहीं किया ही हैड कंसीडर्ड बुर्ज खलीफा एज अ टावर नॉट इन केस आई एम जस्ट टेलिंग राइट इन दैट केस तो उसमें हमें क्या बात करनी है ये नॉट गिवन आएगा फॉल्स आएगा not given because they mentioned they were talking about tallest building they were not even talking about Burj Khalifa. Burj Khalifa is a keyword in this. It's not even mentioned in the passage. So how would we answer this जैसे question? उसमें वहां से तय है कि ट्विन स्टार्स आर द टॉलेस्ट बिल्डिंग
अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द राइटिंग। हम्म। है ना, टॉलेस्ट बिल्डिंग इज दिस, और राइट। इसमें लिखा है टॉलेस्ट बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग की तो बात हो रही है दोनों जगह पे। हाँ। तो हाउ इज इट, मैं इसको नॉट गिवन दूंगा कि मैं इसको फॉल्स दूंगा? No, if they have already tallest is a superlative term, right? Superlative term है. One of the tallest तो बोला नहीं है. It's the tallest. If it was written one of the tallest, then it was not given. But अगर tallest superlative, like tallest superlative means उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता. Best is a superlative term, right? Bestest कुछ नहीं होता, right? Very best ऐसा कुछ नहीं होता. So superlative terms में फिर वो false होगा. ये टॉप फॉल्स फॉल्स हो जाएगा जब यदि अपन इसको ये बोल रहे हैं कि अमंग ऑल नहीं है, तो सिर्फ उसी केस में टॉलेस्ट इज द सुपर। If they said Twin Towers is the tallest building in the world, and the question is Burj Khalifa the tallest building in the world, तो वो तो false ही होगा ना, right? But अगर if the question was true false not given was the if the statement, right? Instruction क्या था? True false not. अगर यही question होता yes no not given का, right? Yes no not given का question होता, it like the writer feels, right? The writer feels Twin Towers is the biggest, is the tallest building, right? और उसके बाद बुर्ज खलीफा का क्वेश्चन वाज इज बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो फिर हो जाता नॉट, राइट? बिकॉज नाउ इट्स नॉट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर ओपिनियन. ओपिनियन तो चेंज होती रहती है ना, राइट? अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई यस नो नॉट गिवन के क्वेश्चंस आर मोर चैलेंजिंग देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. क्योंकि ट्रू जो सच है वो सच है, अर्थ इज राउंड. अब यू कांट आर्ग्यू विद मी इफ इट्स फ्लैट और नॉट, राइट? बट sometimes instead of giving true false not given, right, they give yes no not given. So that's what I'm trying to explain. What's the difference between yes no not given and true false not given is not given, right? तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि you have to understand राइटर के sentiments क्या होते हैं. What does writer want to say doesn't mean if it's true or not, right? मैं बोल रहा हूँ अभी भी पोलियो की प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? अभी होती है नहीं होती उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलता हूँ इंडिया में भी पोलियो होता है, इट्स अप टू मी, राइट? जनरली स्पीकिंग you will find true false not given in your task 1 or task 2, and you will find yes no not given in your task 2 or task 3. हार्डेस्ट में ही आता है जनरली, राइट? जो भी सबसे मुश्किल होता है, हाउ वुड यू सी, हाउ वुड यू डिटरमाइन नाउ, व्हाई एम आई टेलिंग यू दीस थिंग्स? आप कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा, सबसे ज्यादा मुश्किल है? पूरा पैसेज पढ़ोगे फिर पता करोगे? दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? पूरा पैसेज पढ़ोगे एंड देन यू विल डिटरमाइन, नहीं ना? सो क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ही दिखा कि यस टू नॉट गिवन लिखा है, विद इन अ सेकंड यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोना बी द हार्डेस्ट, हमें इसको टच ही नहीं करना है, अभी लास्ट में देखेंगे इसको, right? Because once you start doing the easiest and start scoring in reading, the good thing is you will know if you are scoring na 8 bands, you will know, and if you are not doing good na, you will know. Answer check करने से पहले ही पता चलेगा, because you will get answers पहले ही, copy paste ही करना है. तो mistakes, there are no surprises in reading, it's just pure hard work. There are no surprises. Writing there are surprises, speaking there are surprises. हमने तो इतना अच्छा बोला था, हमने तो इतना अच्छा लिखा था, नंबर कैसे नहीं आए, राइट? इसलिए Because the उसमें, answers are already एंड listed. बिकॉज लिस्टिंग एंड रीडिंग में कभी सरप्राइजेस हो ही नहीं सकते, एंड स्पीकिंग राइटिंग में होते हैं, इसका बैड डिस्क्रिप्टर होता है. वी गोना डिस्कस अबाउट बैड डिस्क्रिप्टर्स व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइट? जस्ट टू अवॉइड दोस सरप्राइजेस. बट यस, इनमें कोई सरप्राइज नहीं होता, या तो आंसर सही होगा तो गलत होगा, सिंपल, राइट? तो दैट्स अबाउट इट, राइट? दिस इज इजी. मार्क इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इजी, ठीक है? समझ में आया पंकज? ओके. इंफॉर्मेशन मैचिंग इजी, दिस इज बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स. ये तीनों जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. एक बार प्रैक्टिस भी फिर से जो करेंगे, इसमें अभी और करेंगे, क्लियर हो। आज ही करेंगे, पढ़ा दूं मैं. These are fill in the blanks, guys. Right? So these are easy.
एक का भी आंसर मिलेगा ना, तो बाकियों के आंसर फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन ये प्रॉब्लम तब देते हैं जब इसमें सिनोनिम्स ऑप्शंस में दे देते हैं। Synonyms are always going to be there. We're going to have a discussion about it. But that's the game, right? It's kind of a vocabulary test as well. Exactly वो word थोड़ी दे देंगे, otherwise how would they understand that you understand a lot of words, right? Matching sentence endings are also easy. Sentence completion sometimes get hard, right? So mark this sentence completion as hard, summary completion as hard, है ना? And short answers are hard. Short answer question is basically you are 2 to 3 words. You have to answer that question in 2 to 3 words. I'll give you an example. We have examples right here. This is one of the examples of short answer, right? US food waste worth more than on offshore, right? This is that, and this is these are the questions you have to answer them in 2 to 3 words or a number, just like in listening. ये example. तो these are hard ones. आप लोगों ने कल देख ही लिया था, right? तो ये थोड़े से मुश्किल होता है, right? And global questions are fine. I don't consider them hard. You get an MCQ. How did it works in list of headings से काफी अलग तरीका का होता है ये. पूरा पैसेज दे देंगे, राइट? They'll give you the whole passage and after that it will be just 1 mark. ग्लोबल क्वेश्चन का 1 मार्क का आंसर रहता है. Will be getting choose the appropriate title for the passage. अब आप हेडिंग आप बता दो and they'll give you 4 options. चारों options will be somewhat very similar to each other, एक जैसे ही होंगे, but now you have to find which one will be the right one, right? And उसके लिए वो समझने के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है, right? You have to understand the passage, right? Otherwise you how would you find the appropriate heading for that, right? So इसलिए this one also requires your understanding of the whole passage. That's why I can, and this is also MCQ ना, MCQ में ही आता है ये भी, तो इसलिए hard. This is one of the MCQs only, right? ठीक है, क्लियर है कौन सा मुश्किल है कौन सा हार्ड है. फीचर मैचिंग हार्ड है. फीचर मैचिंग हार्ड है ना? नहीं, So it was easy. Fill in the blanks. इजी है, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स इजी. मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स Think sentence easy. चूजिंग द टाइटल ग्लोबल क्वेश्चंस Global question mid में. मिड नहीं, हार्ड ही है. यस नो नॉट गिवन. यस नो नॉट गिवन. Yes or no hard or hard. यस नो नॉट गिवन इज हार्ड. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज इजी. उनमें फर्क है ना, अभी वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट. So count it as medium. True false not. there is nothing like medium. Either the question, see medium में भी डाल लोगे ना तो then it's gonna be confusing for you in the exam. Why we are doing segregation is you can identify कौन सा मुझे पहले करना है, कौन सा भी medium में गेम डाल दिया आपने तो फिर सभी medium है ना, फिर तो put him either hard or right just to make things easier for you. Reading tips. Basically, there are some tips which I have, which you should be keeping in mind before giving the exam. Don't expect to understand every single word, right? In reading, because these are scientific passages, right? They will use jargons, they will use scientific talks, tons, kilowatts, whatever it is, generator or something. हमें इंग्लिश के एग्जाम देने आया है कि हम साइंस के एग्जाम देना है, राइट? सो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड. कभी भी ऐसा वर्ड आया तो डोंट गेट पैनिक्ड और समथिंग कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है. इट्स फाइन, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल सेंटेंस. सेंटेंस आपको सेंटेंस का मतलब आना समझ में आना सर जरूरी है. वर्ड आया नहीं आया छोड़ दो, कोई मतलब नहीं होता, हाईलाइट कर दो, राइट? सो बेसिकली दैट्स व्हाट इट्स ट्राइज टू से. Second point, practice your reading skills, not your IELTS skills. I always tell my students to keep practicing your reading skills. How would you do it? सिर्फ एग्जाम दे के हमारे पोर्टल पे ही नहीं. You can practice your reading skills through through reading newspaper, through reading a good scientific कुछ book है, non-fiction books basically you can read. So that helps you to improve your reading skills
उससे क्या होगा, देर विल बी थ्री थिंग्स, बिकॉज यू आर रीडिंग, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, तो आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, द सेकेंड टास्क यू विल इंप्रूव, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी लिटरेचर, आपकी आइडिएशन पे वर्क करेगा, तो फर्स्ट आपके वो डेवलप हो रहा है। Second, reading में, speaking में it will help. How will it help in speaking? If you are reading new words and seeing how they create good words, you wanna use them 100%, right? आपका ब्रेन खुलेगा, एंड रीडिंग में तो हेल्प होगी क्योंकि रीड ही कर रहे हो, राइट, ऑब्वियसली। सो इट रीडिंग अ न्यूज़पेपर और एनी पैसेज और एनीथिंग helps you improve your bands in three modules, राइट, लिसनिंग, और बाकी फोर्थ तो लिसनिंग, उसको तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ही, उसमें तो आज आप सभी पास हो जाओगे, सभी बैठ जाएंगे तो, राइट, तो नॉट अ बिग डील, लिसनिंग इज नॉट अ बिग डील, बट तीनों मॉड्यूल्स में हेल्प होता है, इसलिए रीड रीड रीड, the more you read the more you'll score more, okay, practice your, that's why I've written that, read instructions very carefully, I've told you that, कल उसका अपन ने छोटा सा एग्जांपल किया ही था, one word and or a number one word, right, करा था ना, three words and or a number 55 street, right, so always make sure to read the instructions very carefully, you might think that मुझे समझ में आ गया, but नो, जस्ट रीड इट थ्री टाइम्स, राइट, अदरवाइज अगर ये गलत हो गया ना, तो चार पांच छह वो पूरे सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे बेसिकली, एंड यू विल लूज एटलीस्ट 2 to 3 bands, which means you'll fail basically. Don't panic, yeah, don't panic, because time is of an essence. अगर मैंने रीडिंग के वही 3 पैसेज के लिए आपको 5 hours दे दिए, 5 घंटे आराम से करो, everyone will score 9 bands, आई नो, अभी से ही, बिकॉज आंसर मिल गया, आंसर तो पैसेज में ही है कहीं, राइट, आंसर मिल गया तो कॉपी पेस्ट ही करना है, हाउ हार्ड इट कैन इट बी, राइट, और सीबी, ऑल ऑफ यू आर सीबीएसई क्वालिफाइड बच्चे है ना, तो इसलिए डोंट, इट्स ऑलवेज टाइम इज ऑफ एसेंस, एंड इसलिए मैंने आपको पेसिंग का पहले बता दिया है, easiest task, once you have identified इसमें जो true false not given और fill in the blanks ही है, it shouldn't take you more than 15 minutes to solve it, right, नहीं लगना चाहिए उससे ज्यादा, क्योंकि एक का आंसर मिला, सबके तो धड़ाधड़ नीचे नीचे मिलने ही वाले हैं, नीचे ही पढ़ना है फिर तो इट्स इजी, है ना, तो इसलिए डोंट पैनिक, इट्स प्रेटी इजी, है ना, पैनिक करने से कोई मतलब नहीं है, पेसिंग पेसिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कि टाइम को हमेशा रखो आप ध्यान से, है ना, टाइम की वैल्यू रखो, तब आपकी दिक्कत नहीं होगी, right? It's kind of like a vocabulary test, right? They give you different words, different synonyms, question का word कुछ और रहेगा, इसमें कुछ और रहेगा, but don't panic because of that, right? You don't have to understand every single word. Sentence का मतलब जानना again is very important, right? It's a vocabulary test, but I am telling you, you have to just understand. Don't expect to understand every single word. Like these all tips are interconnected with each other, right? हाँ, सर, अपन एलएमएस पे हाईलाइट कैसे करते हैं, शो मी, प्लीज यूज अ माउस, क्योंकि एग्जाम में भी आपको माउस मिलेगा, राइट, तो बट अभी अगर मैं आपको बताने के लिए बताऊं तो ऐसे करो, ये करो और ये हाईलाइट करो, राइट क्लिक करा, नो, डबल बटन, डबल टू बटन दबाना पड़ेगा आपको, राइट, बट प्लीज यूज अ माउस बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू राइट, हाईलाइट, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मेक सेंस, right, it's really a vocabulary test, but don't panic, don't have to memorize words and everything, just go through it and I'm sure you'll be able to answer all of them. Pacing is crucial, right, but again, don't do it like what examination board tells you, do it my way, 15 minutes, 20 20, अरे यार, जो आसान क्वेश्चन टाइप है उसमें तो कम ही लगना चाहिए ना, उसमें भी आपने 20 मिनट लगा दिए, तो मुश्किल वाले में कितना लगाओगे, 1 घंटा, राइट, तो इसलिए पेसिंग इसलिए अपने को रखना है, इग्नोर एनीथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट अ टॉपिक, समटाइम्स यू गेट अ टॉपिक, फैमिलियर टॉपिक आ जाता है, राइट, तो देन यू फील लाइक दैट, यू माइट फील लाइक यार मुझे तो इसका ना पता ही है, तो आई कैन गिव माय ओन ओपिनियन, नो, सेव योर ओपिनियन फॉर राइटिंग टास्क 2, सिर्फ उसमें अपनी ओपिनियन डालना है और स्पीकिंग में अपनी ओपिनियन देना है, बाकी और किसी में भी अपनी ओपिनियन नहीं देना, राइट, फॉरगेट इफ यू गेट अ टॉपिक, इट्स वेरी रेयर, पर अगर ऐसा हो जाए तो डोंट यूज योर माइंड, राइट, बी केयरफुल व्हेन ट्रांसफरिंग योर आंसर्स, दैट्स व्हाई आई टेल देम, आजकल तो यार पीपीटी में ऐसा हो रहा है, आई एम श्योर पंकज सर आपने जब दिया था पेंसिल यूज करते थे, बट नाउ पीपीटी के अंदर ऐसा हो रहा है कि पेन ब्लैक पेन से होता है सब कुछ,
जैसे पहले तो ऐसा था बस लिख दिया वी कैन इरेज हाँ इट लेटर एब्सोल्युटली, ऑन वी कैन बट इम्प्रूव नाउ इट्स नॉट देयर एनीमोर। अब आपको कट करना पड़ता है, पेन से ऐसा करते हैं राइट, तो वो चलता है आजकल। So that's why I tell all of the students कि please practice on our portal and सीधा pass out हो आप, ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। You can cut anything anywhere anytime, right? But now the was more pen भी they are giving Natraj pens, right? You guys don't know, 5 rupees के Natraj pen, there the examination charges you 19,000 rupees and खुद 5 रुपए के पेन देते हैं आपको। So which is bullshit. Even so more 19,000 now 19, yeah, 18,700 something, which is 19,000. yeah it was Yeah, I remember ना, वो हर साल 1-2 हजार से बढ़ा देते हैं, but the their pencils are bad, their pen are bad, their अब तो उन्होंने पेन इरेजर देना ही छोड़ दिया, लाइक पेन दे देंगे 5 रुपए का। हाँ, आई हैव फॉट विद देम, मैं तो अपने ले जाता था। इफ यू आर गुड विद फाइटिंग ना, मैं तो अपने ले जाता था। So guys, always if you are watching this video, if IDP stops you from taking your own stationery, just fight with them, no problem, because they never mention these things in the instruction, they never mention these things in the contract। जब आप साइन करते हो, टर्म कंडीशंस मिलती है, उसमें तो कभी मेंशन नहीं करते, राइट? तो हमको ले जाना, तो हम, मेरी मर्जी, मेरी आंसर शीट, मेरी पेंसिल, मेरा इरेजर, राइट? व्हाट इज दिस बुलशिट? 19,000 में हम पेंसिल भी नहीं ले आए हमारी। मतलब एक isn't it we can do कि ले जाकर पेंसिल से पूरा फिल किया फिर उसके बाद लास्ट में पेन से ऊपर दे डोंट अलाउ यू टू टेक योर स्टेशनरी, स्टेशनरी अंदर ही कैंपस में एग्जामिनेशन सेंटर में ही आपको पेंसिल ले जाने देंगे, खाली जाओ। जेब में रख के ले गए चुपचाप से What I believe, what I think, what IDP has to say about it, क्या हो रहा था कि पेंसिल ले जा रहे थे, सब बच्चे पेंसिल से ले रहे थे एग्जाम। तो किसी बच्चे ने एग्जाम, जो एग्जामिनर है ना, जो चेक करेगा, उससे सेटिंग कर ली थी कि जो भी मेरी गलती हो ना, मिटा लेना पेंसिल से और सही कर देना, ठीक है? तो उन्होंने पेंसिल वाला लेफ्ट ही खत्म कर दो, पेन से लिखवाया सबको। बट आई डोंट नो, लाइक स्टिल इट डजंट मेक सेंस, राइट? अगर आपने एक पैसेज लिख दिया पेन से पूरा, हाउ वुड यू देन कट इट एंड उस पे फिर एरो बनाओगे, ऊपर लिखोगे? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड इट्स गोना बी वेरी हेक्टिक, और वो फिर फेल होने वाला काम है। आई थिंक दैट्स अ डेलिबरेट स्ट्रेटेजी टू मेक यू फेल इन योर राइटिंग 5.5 ईयर, जिससे कि दे कैन चार्ज 40,000 फ्रॉम यू, नॉट 19,000। दे डोंट वांट 19,000 फ्रॉम यू, आईडीपी डजंट वांट 19,000, दे वांट 40,000 from students। So इसलिए CBT दो, और otherwise if your universities and colleges are accepting PT, तो then go with PT, है ना? यूके, यूके, कनाडा, कनाडा। ओके, बी केयरफुल, लीव नो ब्लैंक्स, है ना? लीव, डोंट लीव एनी ब्लैंक्स, because there are no negative markings, so doesn't have to be there। ओके, समझा? इतना इतना क्लियर हो गया? नाउ विल टॉक अबाउट, we will talk about what are the skills, like what is it that English testing system for IELTS is trying to check, कोशिश क्या कर रहा है? what are the skills you need to improve in order to get good marks? skimming and scanning, but उससे पहले अपन एक छोटी एक्टिविटी करते हैं, right? uh, Download this image, looks nice, okay? You guys can see the picture, right? So now I will ask anyone, let's start with you, right? In 10 seconds, explain me what's going on in English. Mm-hmm. So it's Friday. Mm-hmm. Yeah. Okay, what about you? Okay, good job. It's a good thing, and they are performing some experiments, and I think they are making the medicines also because there's some injections and first aid kits. And there's also a skull which can tell us that. Yeah, good, good, good. Good job.
checklist. They are making a note of what is there and what not, and they are trying to see what are the contents inside everything, checking the contents. Right, right. Pankaj. I think they are making alcohol or antivirals. As I can see from the final product, the box are packed and one sticker is on it. Uh-huh. It's on it, and that's showing a snake that is surrounded. The glass is surrounded by the snake. Right, That's some sort of toxic, but they are also including a lot of emotions as a raw material. I can see the heart. right, 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 right. Okay. Um, ठीक है, I get an idea. So you guys get an idea of how it works. That's good. Now, can you identify a weighing machine? कहीं दिख रहा है weighing machine? दिख रही है? आपको दिख रही है? एक सेकंड, एक सेकंड. Weighing machine? Time. Mark it, take my mouse, mark करो. Weighing scale. Weighing scale, weighing scale, weighing scale. दिशा mark करो. जाके mark करो. Just point. वो देखो. Near under the conveyor belt. ठीक है? So can you guys find paper Yeah, on the box. on the box, right? Can you guys find syringe Same here on the belt there on the on the conveyor belt. belt? Okay, okay. Can you find tea bag, What? a hot water bag? Sorry, hot water bag There on the shelf. on the shelf, Yeah. right? Gloves, Gloves on the machine. right, right. Right side problem. Right. So yeah, you are good in scanning. So basically, आपने क्या किया? First activity you guys did was like in 10 seconds you explained everything. Right? What's the picture going on, what's going on, general idea about what's going on. And second step which you guys did was scanning, right? Where you were particularly looking for some particular thing, right? मुझे I don't care about other things. Just मुझे बता दो कि where is the glove, where is the weighing scale, right? So that's what skimming and scanning basically is, right? You can do another activity perhaps. Uh, Give me 1 second. Let me find it on Pinterest. Yeah, something else. Right, like this is the activity. And try one more time. Explain me what is this picture about. Give me 1 second. Let me download this image first. Right, so now I think I can. Yep, yep. So this is an image. Please tell me what is going on in this image. So image of a family having a picnic. Mhm. They were enjoying having a great time with their family, their pet. Right. Pankaj. They're having a good time. That's the complete family. All the grandfather, grandmother, their pets, everyone is there, even pet. They're spending the most amazing time of their life, I think. Right. So basically, it's a family time. Families spending their family time. They're having a picnic near a garden or a park, where it's a big family. You know, children are playing with their dogs. People are sharing meals with each other, and it's a warm and sunny weather. Simple, khatam. Right. That's basically skimming. What I did. Can you find now this ice cream? Then on the shirt of a girl. Sorry, I can't find it. On the t-shirt of the Girl. T-shirt? Oh yeah, yeah. If you notice this, yes, yes. Can you find the iPad?
or tablet. That does. Right? Okay, okay, okay. We say Prisha find करेगी. Prisha, can you find the shuttlecock? हाँ नहीं. मैं Wait, no question. आराम से. बाकी किसी को मिले तो like don't tell. We'll see where it goes. yeah fine और भी? yeah Guys, नहीं बताना होगा. Find the other items. You find umbrella. Just find umbrella. Pankaj, find. I got the umbrella Where is it? on the cap of the girl Oh, right. and the racket and the shuttlecock is on You the find racket. this and Yeah, I found it. there. Oh, yeah, yeah, yeah. Nice, nice. Cake. आपको बड़ी शटल कॉक. मैं बताऊँ You are the most. ठीक है, we are finding other things at तब तक time take a time find करते हो. Cake. This cake. Yeah. Sometimes you have to look really close, right? Juice, juice. Jar. Yeah, jar of juice. A jar of juice. is it like on the plate of vegetables, the fruits? Yeah. No, 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 no. Downside. It's a glass. Here, here. Yeah, yeah. Where? हाँ यार. हाँ. Where? ये रही. ये? Left. ऊपर. हाँ. ये? Yeah, हाँ. Yeah, it looks like sort of a jar. Yes, 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 yes. It is. Bullseye. Wow, very good, very good. What about very good? This is a big, yeah, it was very hard. इतना पास में आने के बाद भी मुझे दिख नहीं रहा था. Right, right. And I can find this as well. Stack of meat. I think this is, yeah. If you look really closely, you can see. मैं बताती हूँ ना. Shuttlecock में तो मिल ही गई है ना? And the loaf of bread is here on her pant. Where is the shuttlecock? On Here? the racket, yeah. इधर रैकेट में हाँ मुझे दिख गई ये shuttlecock. So it was net. Yes, it was that, but it's the diagram. There's the same thing with this, right? This is also something here, but it's not with the same color, right? So sometimes you get really hard questions. But that's where. ये मिला chicken? हाँ, dog. Oh, okay, dog पर था? अच्छा. Leg piece. Say, oh, it's a leg. Yes. Yeah, absolutely. नहीं मेरे को ये भी नहीं मिल रहा था. Pizza? Pizza. This pizza On the head. head? Oh, maybe? No, no. On the That's yeah. fair. Yes. This is the pizza, right? Yeah, I was thinking ये कुछ design है, अजीब सा है, but what is it?